and welcome. Today we are going to start a very fresh topic and very important for your examination, which is database and SQL. So before starting database, we have to understand what is data. The first question that comes in mind, that strikes your mind, is what is data? So data is a collection of a distinct small unit of information. It means anything which has some information is called data, like number, like images, like pictures, like videos, like audios. Everything is data which has some information. It can be quantitative or qualitative. So there are so many types of data. Quantitative types of data that we can count, like numbers. This is quantitative type. And qualitative, like if you can say that anything in true or false, like if you have an answer in true false manner, then this type of data is called qualitative. Text, numbers, media, bytes, these are some types of data which you already know about. So the word data is originated from the word datum. That means single piece of information, and data is the plural form of datum. Now we are moving to the main topic, which is database. So what is database? Database क्या है? So database is a organized collection of data so that it can be easily accessed and managed. सपोज करो कि अमेज़ॉन एक बहुत बड़ी कंपनी है और उसके पास कई डेटा है, लाइक कस्टमर ने क्या क्या खरीदा, कस्टमर ने कितनी बार खरीदा, और ये सब डेटा अगर अलग अलग फॉर्म में अलग अलग जगह पड़ा रहे, कोई ऑर्गेनाइज तरीका ना हो, तो इस डेटा को एक्सेस करना, इस डेटा से कुछ वैल्यू निकालना, इस डेटा से कुछ कैलकुलेट करना, कुछ एस्टिमेट करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा. इसीलिए डेटाबेस की ज़रूरत पड़ती है हमें. डेटाबेस इस डेटा को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में रखता है. हर जगह डेटाबेस का यूज़ होता है. लाइक आपके स्कूल में आपका नाम, आपने फ़ीस किस मंथ की जमा की, आपकी ईमेल आईडी क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपके फादर का नेम, दिस इज़ अ डेटाबेस. अगर ये कहीं भी इधर उधर पड़ा रहे, किसी भी जगह लिखा रहे, तो ये डेटाबेस नहीं करेगा जब तक वो ऑर्गेनाइज ना हो. सो डिजिटल वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा को डेटाबेस बोलते हैं. What is the purpose of database? So the purpose of database is to operate a large amount of information by storing, retrieving and managing data. So अगर हम किसी चीज़ को डेटाबेस कलेक्शन करते हैं, जैसे स्कूल में अगर आपका डिटेल्स है, तो उसको डिटेल्स को क्यों लिया जाता है? ताकि हमें उस डेटा को स्टोर किया जा सके, उस डेटा को मैनेज किया जा सके, कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़े, उस डेटा से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करना हो, कुछ इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करना हो, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड करना हो, तो उस लिए हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं. There are so many types of data that are available in market, like MySQL, Sybase, Oracle, MongoDB, Informix, PostgreSQL and SQL. इन सबको अलग अलग कंपनीज ने डेवलप कर रखा है. ओके, सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ डेटाबेस? हमें डेटाबेस की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें ज़रूरत? सो डेटाबेस की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ी ताकि हम बहुत सारे डेटा, अगर हमारे पास हैवी अमाउंट में डेटा है, जैसे स्कूल में कुछ बच्चे होते हैं, 100 बच्चे, 150 बच्चे, उसका डेटा एक छोटे अमाउंट में होता है. लेकिन अमेज़ॉन जिसके कस्टमर्स बिलियंस में हैं, तो उस डेटा को ऑर्गेनाइज कैसे किया जाए, उसलिए मुझे डेटाबेस की ज़रूरत पड़ी, ताकि हम डेटा को ईजिली मैनेज कर सकें, ताकि हम डेटा को सर्च कर सकें ईजिली, और कुछ अपडेट करना हो तो अपडेट कर सकें, हमारी एक्यूरेसी मेंटेन हो और हमारी इंटीग्रिटी भी मेंटेन रहे. Okay, so these are some important needs of database, that we can manage the large amount of data, we can easily search and update, we can maintain our accuracy, we can maintain data integrity. All right, now the topic comes, which is relational database management system, RDBMS. What is RDBMS? So it was invented by E.F. Codd in 1970. It is based on relational model. So relational model क्या है? Relational model stores data in the form of rows and columns, and together it forms a table. So what is table? It's very easy. The collection of rows and columns is table. सो जब हम डेटा को किसी रो और कॉलम में रिप्रेजेंट करते हैं, स्टोर करते हैं, तो इसे
डेटाबेस कहा जाता है। Okay, so this is called relational database management system, and here SQL, MS SQL, IBM DB2, Oracle, and MySQL comes under RDBMS. All right. So this is a very basic example of database, how data is managed in a table. So username, suppose this is an ID, this is a database of any website which asks your username, password, and email ID. So in this form the data is being stored in table which contains rows and columns. We will further discuss that what are the tuples, what are the attributes in database. Suppose this is a table of a school which contains roll number, name, grade, and status. So row 1, this is row 2, this is row 3, this is row 4, and this is row 5. So these rows are called tuples, and this is column 1, column 2, column 3, column 4. So the columns in database are called attributes. So we are not going to use the word rows and columns from now. We are going to use rows as tuples and columns as attribute. All right, and this is the first header is called schema. Schema contains the information of the table, the name of the table. So rows or records. So rows contains the records of, suppose that this is a record of students, roll number, name, grade, and status. So one row contains the record of a student. एक रो किसी स्टूडेंट का रिकॉर्ड कंप्लीट रिकॉर्ड स्टोर करता है with his roll number, name, grade, and status. Second one is column. So column is attribute, like if we want to know the attribute of roll number 103, what is his name? So his name is Abhishek. So column contains attribute. So we are going to call column as attribute and rows as tuple. So tuple, as I told you, a single row of a table which contains single record for the relation. किसी भी टेबल का जो एक रिकॉर्ड कंटेन करता है वो उस टेबल का टपल होता है. एंड इन द लास्ट रिलेशनल स्कीमा. सो रिलेशनल स्कीमा डिस्क्राइब्स रिलेशन नेम एंड देयर एट्रीब्यूट्स. सो किसी भी रिलेशन में जो नाम हम रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम रिलेशनल स्कीमा कहते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज डोमेन. व्हाट इज डोमेन? डोमेन क्या है? सो अ डोमेन इज अ यूनिक सेट ऑफ वैल्यूज परमिटेड फॉर एट्रीब्यूट इन टेबल. किसी भी टेबल में जो वैल्यूज हैं उसके सेट्स को जो उस टेबल के लिए परमिटेड होते हैं उसे हम डोमेन कहते हैं. आप अगले एग्जांपल में इसे अच्छे से समझ पाएंगे कि डोमेन है क्या एक्चुअली. एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर a domain of month of year can accept only January, February to December. like अगर किसी टेबल में एक एट्रीब्यूट है डोमेन, एक एट्रीब्यूट है मंथ ऑफ ईयर, तो आप उसमें जनवरी से दिसंबर तक आप कुछ भी डाल सकते हो. लेकिन आप उसमें अगर संडे, मंडे या 1, 2, 3 या ABC डालो तो वो उसमें परमिटेड नहीं होगा, तो वो उसके डोमेन में नहीं आएगा. सो डोमेन मीन्स एक रेंज, एक लिमिट जिसके अंदर की चीज़ें हमें यूज़ करनी है जो हमारे टेबल में परमिटेड है. लाइक अगर आप डोमेन एक मार्क्स का डोमेन बना लो कि एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स पाए, तो स्टूडेंट्स ने जो मार्क्स पाए होंगे वो न्यूमेरिक होगा, 1 होगा, 100 होगा, 20 होगा, 50 होगा, लेकिन वो ABC फॉर्म में नहीं हो सकता. सो वो उसके डोमेन में नहीं आएगा. फॉर एग्जाम्पल ये एक टेबल है जो नेम और एडमिशन मंथ रखा हुआ है. जेके जिसका एडमिशन मंथ जनवरी है, जॉय यहाँ पे उसका एडमिशन मंथ संडे है. सो इज दिस पॉसिबल? नो, संडे इज नॉट ए मंथ, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो इट डजंट लाइज इन द डोमेन ऑफ एडमिशन मंथ. एक और एग्जांपल लेते हैं, नेम एंड सैलरी. सपोज दिस इज अ डेटाबेस ऑफ कंपनी. ओरम इज द नेम and his salary is 24K. Jacob is the name, his salary is 100K. That's okay. But Amy, what is his salary? There is an email ID. So this email ID doesn't lies under the domain of salary. Okay? Hopefully कि तुम समझ गए होगे कि डोमेन क्या है. Alright? So तुम्हारा टास्क, तुम्हें करना ये है कि तुम एक टेबल बनाओ अपने क्लास के टॉप 5 स्टूडेंट का. तुम एज्यूम भी कर सकते हो कोई भी नाम, उसका रोल नंबर,
नेम, ईमेल, मार्क्स और डेट ऑफ बर्थ, और उसमें तुम आइडेंटिफाई करो कि स्कीमा क्या है, टपल क्या है, एट्रीब्यूट्स क्या है। होपफुली तुम इसको करोगे अच्छे से, और अगर तुम्हें कोई भी डाउट होता है तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया है, आप इसे क्लिक करके ज्वाइन कर लो, जिससे आपको और भी अपडेट्स मिलते रहें। तो मिलते हैं हम अगले टॉपिक में, जिसमें हम पढ़ेंगे की क्या है, फॉरेन की क्या है, सुपर की क्या है, सारी की को फंक्शन को पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।